Assalamu alaikum students. In our previous lecture, we studied about electromagnets and permanent magnets. Now our next topic is force acting on current carrying conductor in a magnetic field. That means whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a, a particular force is experienced by the conductor except when it is placed parallel to the magnetic field. जब हम इसको in a parallel direction to magnetic field रखेंगे वायर को करंट कैरिंग कंडक्टर को at that time इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है. That means as we know already from this Oersted experiment that current carrying conductor exerts a force on compass needle. If you remember that experiment when the current carrying conductor was placed near to the compass needle here means magnet. The magnetic needle, that's compass needle, showed a deflection. Deflection means a force is exerted on the magnet, and then another scientist Henry Ampere suggested that reverse of this should also be true, that is magnet must exert an equal and opposed force on the current carrying conductor, and it was experimentally proved that magnet exerts an equal and opposed force on the conductor. Or we can simply say a mechanical force is exerted on a conductor which can make a conductor move. जो deflection आती है conductor में, that is the force, that is because of the force, and magnet exerts equal and opposed force on the current carrying conductor when it is placed in the magnetic field. This force on current carrying conductor in a magnetic field is due to the interaction. बिकॉज वहां पे इंट्रैक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया and either of the two, one will be the stronger, another will be the weaker, and their interaction occurs and a resultant force is experienced by the current carrying conductor because of the या तो वीकर डायरेक्शन में उसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी या तो स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन में उसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, और वी कैन से द कंडक्टर विल मूव ईदर इन द वीकर मैग्नेटिक फील्ड और इन द stronger magnetic field because of the force that is exerted by the interaction of two resultant magnetic fields. And now this is the theory of force acting on current carrying conductor, but the question is in which direction the force will apply on the current carrying conductor. Force तो exert होता है, but the point is in which direction, किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर पे ये फोर्स अप्लाई होगा व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड. एंड फॉर दैट वी हैव अ रूल नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विच गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स on the current carrying conductor when it is placed in any magnetic field. And before this studying Fleming's left hand rule, I will simply say कि वहाँ पे actually होता क्या है, in which direction all this happens, because before knowing the direction of force, we should know the direction of magnetic field, we should know the direction of current, then we can have the direction of force. What happens, we have to remember one thing, that this rule known as Fleming's left hand rule, it was given by Fleming. He said that उसने क्या बोला कि अगर किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, दैट मीन्स इट इज ए कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है, तो वहां पे एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा उस वायर पे, और वो फोर्स की वजह से वो वायर या तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन नॉर्थ डायरेक्शन, या तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन साउथ डायरेक्शन, या तो उसकी डिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी या तो उसकी डिफ्लेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, दैट इज ईदर इन द नॉर्थ डायरेक्शन और इन द साउथ डायरेक्शन. ये उसने सिंपल वर्ड्स में बोला कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज मस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एंड तब जाके उस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, और वो फोर्स उसमें एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा, एक मूवमेंट दिखाएगा, या तो ईदर इन नॉर्थ डायरेक्शन या ईदर इन साउथ डायरेक्शन.
And how actually it happens, we have to remember three things. We have to represent current by I, we have to represent magnetic field by B, we have to represent force by F, or simply you can remember FBI. These are the three parameters which we have to represent, which we have to use to understand this Fleming's left hand rule. और Fleming's left hand rule ने क्या बोला कि Fleming's left hand rule ने क्या बोला कि if this is the direction of magnetic field, this is the direction of magnetic field, these lines represent the magnetic field, and this is the direction, that is from north pole to south pole, from north to south, or we can simply say from left to right. And this is the current carrying conductor. This is the current carrying conductor placed in a direction perpendicular to the magnetic field. This is the perpendicular direction of current carrying conductor with respect to the magnetic field, and the direction of current through this wire is downwards, downward direction through the wire. And now what happens to the force? In which direction will this this current carrying wire deflect when it is placed in a direction perpendicular to the direction of magnetic field? And magnetic field की direction हमें पता है from north to south. अब हमें direction of current भी पता है, that is downwards. Downward is the direction of the current through this wire. And by how we will represent it by our left hand, we have to remember we have to use three things of our left hand. One is the forefinger, another is the middle finger, another is the thumb. And we have to remember forefinger represents the, अच्छे से सुन लेना, forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, and thumb represents the direction of force. Thumb represents the direction of force. देखो अगर इस middle finger ने direction of magnetic field दिया, that is, this is the direction of magnetic field from north to south, it is the direction of magnetic field. Here compare it with the diagram. This is the direction of magnetic field, and downward is the direction of current. Downward direction of current means this forefinger. Forefinger represents the downward direction of current. This is the downward direction of current. Now जिस डायरेक्शन में हमारा थंब रेज हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, that direction will be the direction of force. This is the direction of magnetic field, direction of current, downward direction, and in which direction our thumb raises? In this direction. This is the outward direction. This is the direction of magnetic field, this is the downward direction of current, and in which direction our thumb raises, it gives us the direction of force. That means outward direction में इस time thumb ने point किया outward direction में, and that means इस time if this is the current represented by I, this is the magnetic field represented by B, तो इस time क्या हो जाएगा? This is the downward direction of current, this is the magnetic field. Consider pen as the current carrying conductor. और जब outward, जब thumb ने raise किया outward, that means ये deflect ऐसे हो जाएगा in the forward direction. In the forward direction, that means this line will represent the direction of force, that is here in the, this is the direction नॉर्थ डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में इसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन में. अगर अब हम डायरेक्शन ऑफ किसको चेंज करेंगे? हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर सकते हैं. अब अगर हम फर्स्टली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड वी विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. वी विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अभी तक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट थी, अब हम चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट मीन्स हम अपवर्ड डायरेक्शन करंट लेंगे. जब हमने, and we have to represent all this by our left hand. अभी तक, अब this is the direction of magnetic field फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अभी तक हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन रखी थी, अब हम क्या रखेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इन विच डायरेक्शन विल आवर थंब रेज?
it will raise in inward direction. ऐसे inward किया, that means इस time deflection इस current carrying conductor की inwards हो जाएगी. That means जब हमने direction of either of the two, either of the magnetic field or of the current carrying conductor, जब हमने direction को change किया, direction of force also gets changed. At one time हमें एक ही चीज की डायरेक्शन को चेंज करना है, या तो करंट कैरिंग कंडक्टर करंट की डायरेक्शन या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तब जाके फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या तो इनवर्ड्स या तो आउटवर्ड्स. अगर हम एट अ टाइम दोनों की डायरेक्शन चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की भी करंट की, एट दैट टाइम फोर्स विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन वैसी ही रह जाएगी. अब अगर हमने क्या चेंज किया, अब अगर हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लिया, अब अगर हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, एट दैट टाइम डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो गेट चेंज्ड. डायरेक्शन ऑफ चाहे हम फिर अपवर्ड्स रखेंगे या डाउनवर्ड्स रखेंगे, तो एट दैट टाइम डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो गेट चेंज्ड. जब हमने ऐसे लिया डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने अपवर्ड्स लिया या डाउनवर्ड्स, जो हमने चेंज किया, एट दैट टाइम या तो थंब इनवर्ड रेज करेगा या तो आउटवर्ड रेज करेगा, एंड एट दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द साउथ डायरेक्शन. दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक field. That means we can summarize this Fleming's left hand rule like this. When a current carrying wire is placed in a, you can also write it for your examination in the form of short note. When it is placed in a magnetic field, a force is exerted on the wire. Fleming gave a simple rule to determine the direction of the force, जो उस पे फोर्स एक्ट होता है on the current carrying conductor placed in magnetic field, and it can be this forefinger represents the magnetic field, this is the middle finger, it represents the current, and thumb represents the force, or we can say the motion. जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी, that is given by the thumb. This is the diagram for your Fleming's left hand rule, and we can summarize it like this. According to Fleming's left hand rule, hold the forefinger, the middle finger, and the thumb of your left hand at right angles to one another. Thumb is at right angle to the middle finger, to the forefinger, and forefinger is at right angle to the middle finger. That means all the three are at right angles to each other. Yeah, we can simply say that hold these three at right angles to one another and adjust your hand in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, and then the direction of force is given by the direction of thumb. जिस direction में thumb raise हो जाएगा, point करेगा, that will be the direction of force that is exerted on the current carrying conductor when it is placed in any magnetic field. Now, that means you have to write the direction of force acting on a current carrying conductor, current carrying wire in magnetic field. एक तो वो क्या है, perpendicular to the direction of current. Next, that is perpendicular to the direction of magnetic field, because when the wire is placed in a parallel direction, magnetic field will experience no force, and the current, the force, the magnetic field are at right angles to one another, and we have seen that the direction of force can be reversed by changing the direction of the either magnetic field or direction of the current. क्योंकि हम उन दोनों को change कर सकते हैं, that means we can reverse the direction of the magnetic field, we can reverse the direction of force also. Now, magnitude of force, किस मैग्नीट्यूड का फोर्स इस कंडक्टर पे अप्लाई हो जाएगा व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा दिस फोर्स व्हेन विच इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. फर्स्ट फैक्टर इज करंट, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. कितना ज्यादा करंट हमने थ्रू कंडक्टर पास किया, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई हो जाएगा ऑन द कंडक्टर, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगी कंडक्टर में व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड. जितनी ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स. सेकेंड, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाएगा. लेंथ
कम हुई तो फोर्स कम अप्लाई हुआ. सेकंड फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थर्ड फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाएगा किस पे, इस कंडक्टर पे. एंड वी कैन कंबाइन these three equations by F is directly proportional to I, F is directly proportional to L and B, or F is equal to K times ILB, where this K is the constant of proportionality and its value in SI unit is equal to 1. That means we can have the equation for motion, for force, F is equal to ILB. F is equal to ILB, or simply that means how much this force equals, it is equal to current times length times magnetic field which is applied on the current carrying conductor. Or we can have the formula for magnetic field from this equation, B is equal to F upon I into L, and the unit for magnetic field we can derive it from the units of force, from the unit of current, from the unit of length, as we have already studied in our earlier classes that the unit for magnetic field is Tesla. For magnetic field is Tesla. Now we can have how much this 1 Tesla equals. 1 Tesla is equal to force का हमें पता है न्यूटन, 1 न्यूटन, करंट का हमें पता है 1 एम्पियर, मीटर का हमें लेंथ का हमें पता है 1 मीटर. That means 1 Tesla is equal to 1 Newton upon 1 meter into 1 ampere. That means 1 Tesla we can define it as the magnitude of magnetic field is 1 Tesla if conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere experiences a force of 1 Newton when placed in a direction perpendicular to the magnetic field. जब हम किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर को रखेंगे, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, the current carrying conductor will experience a force of 1 Newton when a current through the conductor is 1 ampere and its length is 1 meter. Then the magnetic field becomes equal to 1 Tesla. That is the SI unit of magnetic field. It's all about today's